So this session is aimed at understanding certain basic aspects of linear equations in two variables, and will be primarily dealing with the content that is being taught in CBSE boards, class 9th and 10th. In the first part, we deal with the general form of linear equations in two variables. So कोई भी linear equation दो वेरिएबल्स के साथ जब होता है वी प्रिफर टू राइट इट एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल्स हैं. a and b are constants and c is also a constant. For an example is minus 2x plus 3y plus 12 equals to 0, or 2x plus 3 equals to 5 can also be considered an example. Now the thing is, अगर फॉर्म हम कहते हैं कि ए वाई प्लस बी एक्स प्लस सी, वो भी सही होगा. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वो भी सही है. बट एज यू कैन सी इन द सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, यहाँ पे b का कोई वैल्यू नहीं है. b डज नॉट हैव एनी वैल्यू. b का कोई वैल्यू मेंशन नहीं है. बट इज इट ट्रू दैट b डजंट हैव ए वैल्यू हियर? Of course not. Here b can be taken to be 0. Check it out for a second. As you can see here, we can write the equation as 2 multiplied by x plus 0 multiplied by y plus 3 minus 5 equals to 0. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम 0 के साथ y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज y वेरिएबल के साथ यहाँ पे कोई टर्म नहीं है. दैट मीन्स दैट टर्म विथ y वेरिएबल इज 0, एंड 0 को तुम एक स्टेटमेंट में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, डजंट मेक अ डिफरेंस, राइट? सो वी कैन ऑल्सो गेट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस जनरल फॉर्म. वो क्वेश्चंस क्या है? एक एग्जाम्पल, लेट अस चेक. वी आर गिवन एन एक्सप्रेशन माइनस 2x प्लस 3y माइनस 12. अब इन जनरल सेंस इट इज़ नॉर्मली इक्वल्स टू 0, जैसे कि राइट साइड के इक्वेशंस में लिखे हैं. बट अनलेस एनीथिंग एल्स इज मेंशन्ड, assume it to be 0, just in this fashion. So you're getting an expression written like this. यहाँ पे what you can see is a equals to minus 2, b equals to 3 and c equals to minus 12. How is that? Because minus 2x plus 3y minus 12, it can be a little confusing. Let me break it down for you. Now this is the expression that we have, minus 2x plus 3y minus 12, and the form that we're supposed to have it is ax plus by plus c. So these terms have to be separated by the sign of plus. So let us do that. See how it's done. Plus minus 2x plus 3y plus minus 12. If you write it in this form, you will find it very easy to find the values of a, b and c. For example, here this is a, 3 is b and minus 12 is c. It's that simple. Similarly, there are also 3 more questions on the bottom right hand section of this page. Please try to solve them and check if you can.
And keep in mind, the right hand side of the equals to is supposed to be having 0. So वो फॉर्म में RHS में 0 होना चाहिए. कहीं पे भी अगर 0 नहीं है, try to eliminate the right hand side term and convert it into 0 before you are actually going to find the value of A, B and C. Now that brings us to the question that we will always possibly get some expressions or equations which omit out one term or the other. कहीं पे y के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि y का टर्म नहीं होगा प्रेजेंट, या फिर कहीं पे x का टर्म प्रेजेंट नहीं होगा, कहीं पे c का कांस्टेंट यानी कि जो कांस्टेंट का वैल्यू है ax प्लस बी वाई प्लस सी में जो c है दैट इज़ अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट मेंशन नहीं होगा. सो हाउ डू यू अप्रोच सिनेरियोज लाइक दैट? As you can see right here, 2x minus 3 equals to 0 is one such example. And we can write 2x minus 3 equals to 0 as 2x plus 0y minus 3 equals to 0. Because 0 into y eventually gives us 0. So it doesn't actually affect the value or the equation. But it puts into perspective that इस एक्सप्रेशन को भी ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे b का वैल्यू 0 है. As you can see 0y, so b is 0 here. Similarly in the right side expression 2x minus 3y equals to 0, we are not given a value of c. c का कोई वैल्यू मेंशन नहीं है वहाँ पे, so we can take c to be equals to 0. आप लोग को ऐसे भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं where you are asked to find the solutions. एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, लाइक यहाँ पे गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7, एंड फॉर दैट यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस. एज इन सॉल्यूशंस का अर्थ ये होता है द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स, या फिर दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू. लेट्स सी हाउ. फर्स्ट लेट अस आइसोलेट x. ठीक है, you can see the top right corner, you can isolate x and x का वैल्यू क्या आएगा. For isolating x you can write 3x equals to 7 minus 4y. अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3. Then what happens? You get x equals to 7 minus 4y by 3. Right? And in that same value of x, you're getting a value of x for a corresponding value of y. So x का वैल्यू जो है वो y पे डिपेंड करता है. किस तरह से? जिस प्रकार से ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे. So what you do is you take any value of y. For example, y को आपने 1 मान लिया. After taking y to be 1, what you do is x का जो वैल्यू है यानी कि 7 minus 4y by 3 पे you replace this y by 1. इस एक्सप्रेशन में -4y में y की जगह you use 1. So that gives us 7 minus 4 into 1 by 3. That means 7 minus 4 equals to 3. 3 by 3 is equals to 1. So if x equals to 1, y equals to 1. Similarly, you can try other values. y की जगह आप लोग 2 ट्राई कर सकते हो, y की जगह आप लोग 0 ट्राई कर सकते हो, एंड x का वैल्यू यू कैन फाइंड आउट. सो व्हेन यू फाइंड सच अ सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे यू फाउंड आउट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1, यू राइट इट इन द फॉर्म x
y, यानी कि यहाँ पे you people will write like 1 1. I hope you're all getting it. Similarly, there are other two questions, x plus pi y equals to 4 and 2 by 3x minus y equals to 4. Try solving these two questions on your own and find the solutions. Find at least 3 solutions for each question. जैसे यहाँ पे आपने ट्राई किया y equals to 1 and you got a corresponding value of x. अगर आप y की जगह 0 डालेंगे आपको x का और कोई वैल्यू मिलेगा. ठीक है, लेट मी शो यू. अगर आपने y को 0 एज्यूम किया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x विल बिकम सेवन माइनस 0 by 3. That means 7 by 3, right? So this is another solution. इस solution को हम कैसे लिख सकते हैं? सेवन by 3, 0. यहाँ पे 7 by 3 x की वैल्यू है एंड 0 y की वैल्यू है. I hope this is clearly understood. Similarly, you can also be asked a question like the one given on the screen. Check if 3, 0 is a solution of 2x minus y equals to 6. So ये आपको कैसे करना है? How do you solve it? Let us see how. What you do is 3 and 0 is mentioned. It is in the form. So 3 is x and 0 is y. I hope that's clear. Let us plug in the values. Expression is 2x minus y equals to 6. 2 into 3, x की जगह हमने 3 यूज़ किया है, माइनस y की जगह 0 यूज़ किया है, इक्वल्स टू 6. एंड 2 into 3 is 6 minus 0 equals to 6. So this equation is valid. For these given values the equation is true. Assume अगर आपको ऐसे दिया होता, अब चेक करिए if 2, 1 is a solution of this equation, तो आप क्या करते? x की जगह 2 डालते, जैसे कि 2 into 2 माइनस y की जगह 1 डाल दे, and that means 4 minus 1 equals to 3. इसका मतलब ये है 2x minus y का वैल्यू for x equals to 2 and y equals to 1 would have been 3, and 3 is not equals to 6. 3 and 6 are not equal. So if somebody asks you, is 2, 1 a solution to this equation? The answer is no. It's not. But if somebody asks if 3, 0 is a solution to this equation, yes, we have verified. वेरिफिकेशन तब होता है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का वैल्यू. ऊपर आपने देखा 2 into 3 minus 0 एंड राइट हैंड साइड में 6 दिया है, दोनों का वैल्यू इक्वल है. बट हियर यू कैन सी द वैल्यूज आर नॉट इक्वल, विच इज़ वाई 2, 1 is not a solution and 3, 0 is a solution of this equation. Whenever you are given some values and you are asked to check if those values satisfy any equation, in that condition अगर आपका left hand side equals to right hand side, then yes,
that value satisfies the equation or that value is a solution of the equation. If LHS not equal to RHS, तो वो values जो आपको दिए गए हैं, they are not the solution of the equation. Another similar question that you people can get is, find A if 1,6 is a solution of 8x minus ay plus a square equals to 0. Right? अब इसको कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट स्टेप इज x की जगह 1 यूज़ करिए एंड y की जगह 6 यूज़ करिए. सो द एक्सप्रेशन दैट यू गेट इज 8 into 1 minus a into 6 plus a square equals 0. That is 8 minus 6a plus a square equals to 0. And now what you have to do is you have to factorize it, right? How do you factorize it? You can see here we have used middle term factorization, and the values of a that we have obtained are a equals to 4 and a equals to 2. And that's your answer. This kind of questions can be pretty easy if you know how to approach them, right? First, you have to substitute the values of x and y, and in certain cases you can straight away equate them to RHS, that is 0 in this case, or as here आप लोग को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स फाइंड करने पड़ सकते हैं. Another important part of this chapter deals with questions where you have to draw graphs, right? Say you are given an expression x plus y equals to 4, and you are asked to draw a graph for this specific equation. How do you draw that? Again, remember how you found solutions. पहले what you can do is isolate y, and isolating y will give you y equals to 4 minus x. x की जगह 1 डालिए. Whenever you are using the value of x equals to 1, तो y का वैल्यू क्या होगा? 4 minus 1 equals to 3, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा. x का वैल्यू 2 ट्राई करिए, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 4 minus 2 equals to 2 आ जाएगा. So you will be getting y equals to 2 for x equals to 2. And let us say try x 0 के लिए y क्या होगा? x को 0 ले लीजिए, तो y आपका 4 आ जाएगा. Now we know that for 3 different values of x, we have 3 different values of y which satisfy this equation or which are solutions to this equation. अब आप क्या करिए? Draw a graph. Say on a graphing sheet you make a graph, and what you have to do is you have to mark the values, right? The values that you previously obtained. X equals to 1, y equals to 3. So 1 is 1 and 3. How do we mark it?
Here you have marked the first point 1, 3. The value of x being 1 and y being 3. The second part is 2, 1, 2. X equals to 2 and y equals 2. Let us mark it. X equals to 2 and y equals to 2. Where is it? This point. Right? Next point is x equals 0 and y equals 4. Let us mark that as well. Now you can see the 3 points that have been marked. And now we draw a line passing through it, right? This gives you a graph for the given linear equation. And done. The solution to this question is done. This is how we have drawn a graph for x plus y equals 4. Similarly, you might get different questions. Alright? The question given 3x plus 5y equals 15. If you are asked to draw a graph for this, you have to follow a similar approach. First, find the values of xy pairs. जैसे हमने यहाँ पे 1, 3, 2, 2, 0, 4 वैल्यू फाइंड आउट किया, वैसे ही फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, एंड आफ्टर फाइंडिंग 3 और 4 वैल्यूज़ आप उन वैल्यूज़ को ग्राफ पर प्लॉट कीजिए. मार्क द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, एंड आफ्टर मार्किंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, what you can do is you can draw a line through them so that the graph is made. In some cases, it can also be helpful if you take the value of x to be 0 and then find the value of y, and take the value of y to be 0 and then find the value of x, and you will be getting 2 points, right? For the first case, the point you will be getting will be something like 0, y and x 0, where y and x can be anything depending upon the equation that you are given, right? And these 2 points that you locate, one of them will be on the y axis line. You can see the point 0, y is something like this. उसका x का वैल्यू 0 है. It does not have to take any value of x. X can be 0. And you will get another point which is x0. Something like this. This line will not have to take any value of y. So एक जगह पे x0 है, एक जगह पे y0 है, and you can simply connect those 2 points. एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा. You can connect those 2 points to get a line. Both of these approaches are actually very similar. In one case, you are taking x equal to 0 and finding the values of y, and you're doing the same with y, so that you're finding isolated values of x and y. x एक्सिस पे एक पॉइंट और y एक्सिस पे एक पॉइंट आप ढूंढ रहे हो. ठीक है, जो भी पॉइंट का वैल्यू x इक्वल्स टू 0 है वो पॉइंट y एक्सिस पे है, एंड जो भी पॉइंट का वैल्यू y इक्वल्स टू 0 है वो पॉइंट x एक्सिस पे है. ओके, आई होप इट इज़ अंडरस्टूड. You should find similar questions in exercise 13.3 of R.D. Sharma, right? Try solving those questions. Exercise 13.3. R.D. Sharma, class 9th. Moving on. There is another kind of question that you people might face. One we have got here. A 3-wheeler scooter charges rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 per kilometer for every subsequent kilometer. For x kilometers, rupees y is paid. Write a linear equation for this scenario. Now question ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है, सपोज तुम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हो
एंड तुम ऊबर में काम करते हो, राइट, ओला, ऊबर या फिर जो भी रैपिडो। सो पहला किलोमीटर का कॉस्ट जो है इट इज़ ₹15 एंड उसके बाद जितने भी किलोमीटर्स ट्रैवल करना है हर किलोमीटर का कॉस्ट ₹8 आएगा। फॉर एवरी एक्स्ट्रा किलोमीटर यू ट्रैवल you have to pay ₹8 more. So अगर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड x किलोमीटर्स है, बिकॉज इट इज़ मैंशनड फॉर x किलोमीटर्स, टोटल पेमेंट जो किया जा रहा है दैट इज़ ₹y. सो योर टास्क इज टू फाइंड ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस केस. हाउ डू यू डू इट? थोड़ा अपना दिमाग लगाओ. Okay, let me tell you how to solve it. So you know the first kilometer cost is ₹15. ठीक है. अगर टोटल किलोमीटर्स n किलोमीटर्स हुआ देन 1 किलोमीटर चलने के बाद रिमेनिंग डिस्टेंस क्या है? इट इज़ n-1 किलोमीटर्स एंड एक एक्स्ट्रा किलोमीटर का कॉस्ट ₹8 है. सो n-1 किलोमीटर्स का कॉस्ट n-1 इंटू ₹8 है और पहला किलोमीटर का कॉस्ट एज इट इज़ 15 था. सो टोटल कॉस्ट क्या हुआ? 15 एंड n-1 इंटू 8 और 8 इंटू n-1. वन इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट इज़ फॉर x किलोमीटर्स की जगह इस क्वेश्चन को फॉर n किलोमीटर्स मान सकते हो. Here the variable has been mentioned as x, the total kilometers has been mentioned as x, but we have solved it as taking total kilometers to be n. So the answer you will actually be getting is y equals to 15 plus 8 x minus 1. n की जगह बस x डालना है, ठीक है. Now, there is another similar question. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for every additional day. Now, एक लाइब्रेरी है जहाँ से जब आप कोई किताब बोरो करते हो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए यू हैव टू पे ₹27 एंड उसके बाद जितना एक्स्ट्रा डेज़ तुम बोरो करोगे उसके बाद जितने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ डेज़ किताब को आपको रखना है हर दिन का ₹y लगेगा, ठीक है. इस सिनेरियो के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखना है कीपिंग इन माइंड दैट किसी ने टोटल पेमेंट ₹27 का किया है 7 डेज़ में, ठीक है. सो हाउ डू यू फाइंड अ सॉल्यूशन, यानी कि हाउ डू यू राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दैट? लेट अस सी. टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ 7 है. फर्स्ट 3 डेज़ का कॉस्ट ₹x है. फर्स्ट 3 डेज़ के बाद कितना बचा? 4 डेज़, राइट. अगर एक एडिशनल डे का कॉस्ट ₹y होता है, 4 एडिशनल डेज़ का कॉस्ट क्या होगा? 4y, राइट. टोटल कॉस्ट जो होगा दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट 3 डेज़ प्लस कॉस्ट ऑफ द एडिशनल 4 डेज़, यानी कि टोटल कॉस्ट 27 है, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 3 डेज़ x है and cost of additional 4 days 4y है. So the expression that we get is 27 equals to x plus 4y. I hope it is clear to all of you. You will find similar questions in exercise 13.3 of R.D. Sharma book of class 9th. Please go through them. One more of those questions is if 2 and minus 2 lies on the given linear equation 5x plus ky equals 4. Find k. So this is yet another type of question where you are given a point and वो point ये बताया गया है कि एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है उस ग्राफ के ऊपर है, या जो ग्राफ का लाइन है उस लाइन के ऊपर है, एंड यहाँ पे एक अननोन वैल्यू है k एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. दिस इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली. लेट अस सी हाउ. नाउ 2 and minus 2 वो ग्राफ के ऊपर लाई करता है, ठीक है.
सो इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है उनमें से ये एक है, -2 एक सॉल्यूशन है. सो अगर हम x की जगह 2 और y की जगह -2 यूज़ करेंगे, सो ये सॉल्यूशन होल्ड करना चाहिए, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई जो भी x का वैल्यू है प्लस k मल्टीप्लाइड बाई जो भी y का वैल्यू है शुड बी इक्वल टू 4. सो यहाँ पे x को हम 2 ले रहे हैं एंड y को -2 ले रहे हैं बिकॉज दिस आर द coordinate of the points which is said to be on the graph of the solution or graph of the linear equation. So 5 into 2 and k into -2 equals 4. That means 10 minus 2k equals 4. So -2k equals -6 or k equals to -6 by -2 which is equal to 3. So now we have gone through some basic concepts that are mentioned in the book of class 9th. Now it's your turn. Go back, open up the R.D. Sharma book and try solving the problems that are in chapter 13, right? It is a must to solve these questions if you're in class 9th. Even if you're in class 10th, solving these might be helpful. Will definitely be helpful. I rephrase, right? And the next session will be based on the content in class 10th book. Stay tuned. Thank you.